बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास इंग्लिश 8th, वेलकम टू द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ज़िंदगी में जैसा कि हमारा स्लोगन है, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ रहे होंगे। अपनी सेहत के लिहाज से भी, अपने इल्म के लिहाज से भी और अपनी केयर के लिहाज से भी। आए एसेस की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला ऐसे है, माय फादर। फादर इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, बट अ काइंड एंड जनरस फादर इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। एमरियाज इज़ माय डियर फादर। ही इज़ एन SST इन लोकल हाई स्कूल। बेटा SST सीनियर सब्जेक्ट टीचर, यानी कि जो अपने स्कूल का सब्जेक्ट का माहिर हो। He is about 45. He is tall and sturdy. आप sturdy की जगह strong का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। He has beard. वो बारिश हैं, यानी कि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है। He has a graceful personality. Graceful, पुरवकार, भावकार। He is an MA B.Ed. He is a true Muslim. He says his prayers regularly. He recites the Holy Quran daily. He awakes us early in the morning and takes us to the masjid. He makes us to live according to the Sunnah. He never lets us go astray. बेटा सुन्ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कहते हैं, और आस्ट्रे गुमराह होना, यानी कि हमारे वालिद हमारी इतनी अच्छी तरबियत करते हैं कि हमें गुमराह नहीं होने देते, रास्ते से भटकने नहीं देते। He does his duty honestly. He teaches us to be honest to our work. He leads a simple life. He is Allah fearing. He helps the poor and the needy. He is a patriot. Patriot मुहब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला। He loves Pakistan devotedly. He is a social worker also. He has lovely relations with neighbors. All the people like and respect him. He loves me dearly. I am proud of my father. I love him. I obey him. May he live long. डियर स्टूडेंट्स, इसकी ट्रांसलेशन भी दी हुई है और आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ की शुरू में भी लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इसको याद भी करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।